Good afternoon, everyone. Welcome to the Nifty Expiry session, and I hope you guys are doing great. मार्केट की अगर बात हम करें तो निफ्टी में एक अच्छा खासा फॉल भी आया, राइट? जो हमने सुबह मार्केट ओपन के टाइम हम जो बात कर रहे थे, एंड आज के एक्सपायरी के लिए हमारे साथ जुड़ेगी शिवांगी मैम, राइट? एंड वो आपके सारे इनपुट्स बताएंगे मार्केट में हमें कौन सी डायरेक्शन में आज ट्रेड लेना है. अगर हमें कोई लॉन्ग पोजीशन होल्ड करना है तो डेफिनेटली शिवांगी मैम will suggest the same to us. So yes, let's wait for Shivangi to join us. So I guess Shivangi is already here. So guys, a little change. We will have our Sensex King today with us for the Nifty expiry session. And आपको तो पता ही है मधुर सर के सेशंस हमारे लिए मोस्टली प्रॉफिटेबल रहे. So let's see मधुर सर हमें आज किस तरीके से निफ्टी एक्सपायरी में हमें ट्रेड करवाएंगे and how exactly it will benefit us considering कि मार्केट में आज थोड़ा सा bearish momentum है, from the opening itself बहुत सेल ऑफ हो रहा है, फॉलो बाइंग कुछ दिख नहीं रहा है. So yes, let's get the complete insights about the market from the expert themselves, Mr. Madhur sir. And अगर किसी stock specific में actions रहा, definitely we will suggest you guys the same. So yes, please be with us. कोई भी BTST idea रहेगा, we will definitely share the same. जैसे कि हमने आज एक सफायर पे BTST suggest किया था, right? And उसमें हमने 3%, 0.5%, sorry 3 या 3.5% के आसपास हमने बुक भी किया प्रॉफिट. सो ऐसे ही हमारे साथ सारे ट्रेड्स में जुड़े रहिए. We will definitely going to share a lot of trades out here on the Stockholm also. So don't forget to visit Stockholm at regular interval of time on a daily basis so that you don't miss any of the trades that we share over here as well. So Madhur sir, let me know if I'm audible to you. Yes, Avinash, you are clearly audible. Great. Let me know when we are good to go. Sure. I hope the screen chart is visible, Avinash. Yes, Madhur, it's visible. Your camera is off, I guess. Yeah, I'm turning on. Yes, you are absolutely visible now. If you are good to go, then you can start the session, sir. Yeah, sure. So, very good afternoon, everyone. Welcome back to the expiry day. Right. So, some bearishness in the market as Nifty is down by more than 0.5%. Right, trading near 23,560 level. Right. Few minutes back, the SBI results, quarterly results came out and kind of recovery in the bank Nifty, but Nifty is trading near day low. Right, we have seen some 50-70 point recovery in the bank Nifty, but Nifty is not. Nifty is trading at a day low. So overall, if I talk about on a bigger picture, still the view is slightly positive, but for the intraday purpose, the bias is a negative because we are trading the below weekly as well as daily VWAP. And if you look at the 15-minute chart since morning, it's forming a lot of lower bottom on a 15-minute chart, on a 30-minute chart as well. I look at the 30-minute chart, it clearly forming a lot of lower bottom on a lower time frames. That's why we're going slightly negative bias. But if I talk about some weekly picture of the Nifty, the bias is slightly positive because still on a weekly time frame, the higher low structure is intact, right? But in a daily frame, there's a negation of higher low, higher high sequence on a daily frame today, right? A kind of bearish engulfing form on the daily chart of the Nifty. So on a positional basis, the immediate hurdle seen at the 23,800 zone, right? Yesterday we hit the 23,800, but the follow-up buying is missing on upper levels. And from the last 2 days, index is trading in the range of hardly 200 to 50 points, right? And that's why the immediate resistance will come around 23,800, and the immediate support on a positional basis will be around 23,333 zone. Yes, the 23,333 zone is a very key number for the Nifty.
Now later about the for the expiry point of view, if I'm talking about the for next 1 hour, the supports for the Nifty is around 23,330 zone. 23,530 zone. So 23,530 is the immediate support for the next 1 hour. And if I'm talking about the resistance, so 23,590, 600 is the immediate hurdle for the next 1 hour. Look at the 15-minute chart that 9 EMA is not able to surpass for the Nifty since morning itself. Right? Every time it goes there, we're witnessing some kind of pressure from the upper levels. So keep that number 590, 600 for the resistance for next 1 hour, and 23, 520, 530 is a support for the next 1 hour. This is the Nifty. Now let's talk about the Bank Nifty. The Bank Nifty chart, and we have seen some recovery from the lower levels in the Bank Nifty post the SBI's result. Right, few minutes back, SBI result came out and some recovery in the Bank Nifty. Right, Bank Nifty is taking a support at EMA 200. 2 days back, index surpassed the 200 EMA, and from last 2 days, if you look at the low of last 2 days candles, it's nearly about its 200 day EMA as well as 50 day EMA. Right, even today's low is around 50,150, and 2 days back on the Wednesday, it yesterday, right? Yesterday, if low is around 50,215. So both the last two candles low is around 50 as well as 200 demo for the Bank Nifty, right? So on an immediate basis, the Bank Nifty support seen at 50,000 and others is seen at 50,500. The Bank Nifty is not able to hold above 50,500 zone. Though it surpassed today, but not able to hold, and yesterday is also high is around 50,500. The 50,500 is the key number for the Bank Nifty to move towards 51,000 level. The Bank Nifty able to cross and hold 50,500 zone, we can see the momentum towards 51,000. On immediate basis, support is seen at 50,000, right? So this is a quick update. Now, Madhur sir, if I talk about मधुर सर सॉरी टू इंटरप्ट एक्चुअली काफी लोग यहाँ का ऐसा कहना है कि इफ यू कैन कीप इन बोथ द लैंग्वेजेस ना इंग्लिश हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश sure, 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 Avinash. Okay. तो बैंक निफ्टी की बात करें तो लास्ट 2 दिनों से 50 टेमा एंड 200 टेमा पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है. लुक एट द लो, लास्ट 2 दिनों का लो अराउंड वहीं पे है, बट द प्रॉब्लम है कि 50,500 ऊपर में सरपास नहीं कर पा रहा है. सरपास भी कर पा रहा है, होल्ड नहीं हो पा रहा है ऊपर के लेवल में. तो जैसे ही 50,500 का लेवल बैंक निफ्टी होल्ड कर पाता है, अब हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी एक 51,000 तक का मोमेंटम दे सकता है. ऑन इमीडिएट बेसिस 50,000 इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, राइट? 50,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. ऑन इमीडिएट हर्डल 50,500 एंड देन 51,000. दिस इज द अपडेट ऑन द इंडेक्स. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सेक्टर वाइज, थोड़ा सा आज स्टॉक्स में प्रेशर देखने मिला है, राइट? ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में थोड़ा सा सेलिंग देखने मिली है हमें आज, right? So the strike I'm tracking, that is a 23,650 put for the Nifty. On an intraday chart, Nifty is forming a low top, lower bottom, but the problem is जो momentum होना चाहिए बाइंग के लिए momentum नहीं है आज. Index slow and gradually नीचे आ रहा है, right? We'll go with the chart of 23,650 put. So this is a chart of 23,650 put on an intraday basis or a 15-minute time frame. राइट, आप देख सकते हो. प्रॉब्लम ये है कि इंडेक्स तो नीचे आया है, बट द मोमेंटम जो होना चाहिए बाइंग के लिए मोमेंटम आज नहीं है. सो बिकॉज ट्यूसडे में जो मोमेंटम था वो काफी अच्छा मोमेंटम था ट्यूसडे में 2 दिन पहले, तो वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था. उसके बाद लास्ट 2 दिनों से अगर कल की भी बात करें तो एक बहुत ही शॉर्ट रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा था. आज की भी बात करें तो निफ्टी की रेंज जो है काफी शॉर्ट है और स्लो एंड ग्रेजुअली निफ्टी नीचे आ रहा है. तो जो बाइंग मोमेंटम होना चाहिए वो बहुत डिफिकल्ट है. इवन 5 से 10 पॉइंट भी कैप्चर करना है आज बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, पर्टिकुलरली इन ऑप्शन बाइंग.
because today is completely a option writers day. ऑप्शन प्रीमियम में काफी हमें डिके देखने मिला है. वन मोर थिंग कि इंडिया विक्स में भी काफी अच्छा गिरावट देखने मिला है लास्ट 2-3 दिनों में. पोस्ट बजट विक्स इज डाउन बाय नियरली 20-30%. दैट इज आल्सो अ साइन कि प्रीमियम्स पे ज्यादा कुछ मोमेंटम रहेगा नहीं, राइट? You can see on a budget day the VIX is around it made a high of around 16.5. From there onwards now VIX is around 14. So 20-30 point का fall VIX में भी देखने मिला है, and that's why the premiums are cooled off and बहुत कुछ premium momentum नहीं हो पा रहा है यहाँ पर. Yes, Avinash. So the 2650 put we are tracking. Wait for the dip in that put. The put is trading near 75. If I'm talking about the support and hurdle of that put, so the support that put is around 65 level. If it comes around 65-68 level, then we will go with the trade. Otherwise, we will avoid the trade. Now, Anash, we can continue some queries now. Sure, sure, Madhur sir. Apple CUB शेयर किया था BTST and that is down by 4%. उससे क्या करना है? Should we hold or exit? Apple, sorry, I guess उन्होंने दानेश्वर जी ने Apple और CUB में BTST किया था and it's down by 4%. If I'm talking about the Apple is trading the flat as of now and setup wise काफी अच्छा है. Yesterday it was up by nearly 8-9%. Today is trading flat. Right, नीचे के लेवल से बाइंग देखने मिली है. 200 डेमा से ऊपर सरपास होते हुए दिख रहा है यहाँ पर, और स्टॉक कैन हिट टुवर्ड्स 1750 लेवल इन कमिंग वीक्स, राइट? सो एप्पल अगर लिया रहेगा तो आप इसमें बने रह सकते हैं. 1600 का आप इसमें सपोर्ट रख सकते हो. 1600 के नीचे अगर क्लोजिंग आता है तो इसमें आप एग्जिट कर सकते हो. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द CUB. The City Union Bank, yes. Yeah, today is down by more than 3%. And काफी बड़ा आज एक bearish engulfing candle इसमें फॉर्म हुआ है. From last 3 days it was forming a height of higher bottom. इसका negation भी हुआ है आज. So अगर 170 के नीचे अगर स्टॉक आता है तो आप बेटर इस पे एग्जिट कर दें. Great. We want 23 550 call bought at 26. 23 550. today's expiry. Right. So as I'm said कि my bias is slightly negative. So my call के साइड तो मेरा मोमेंटम है नहीं. 23 550 कहाँ पर बाय किया है अविनाश? 26 पे. ओके, सो बेटर आप इसे एग्जिट कर दे, राइट? द बायस इज स्लाइटली पॉजिटिव और यहाँ पे बेटर है इसमें डिके होना चालू हो जाएगा, बिकॉज ऑलमोस्ट एक्सपायरी के लिए हाफ एन आवर बाकी है. तो ये पूरा इसमें डिके हो जाएगा. आप इसे एग्जिट कर दे. कीप द स्टॉप लॉस ऑफ 17-18. अगर 17-18 के नीचे जाता है तो बेटर आप इसे एग्जिट कर दे. View on Zydus Life. Before that, Avinash, one stock on the radar for the overnight BTST trade, that is the Ujjivan Small Finance. Stock is trading at the 38.41 level with a stop loss of 37.1 for the upside target of 40. Almost from last 2 weeks, stock is up by nearly 15%. Weekly में negation हुआ है with strong volumes. On a daily chart forming a height of higher bottom from last 8 to 10 trading session, right? 2 दिन का pause लिया था, आज फिर से अप मूव के लिए रेडी है and ये अप मूव कंटिन्यू रहेगा हमें लग रहा है. तो with a stop loss of 37.10 for the upside target of 40. Sir, Madhur sir, could you please repeat once again the BTST trade for us? Yeah, it's a Ujjivan Small Finance Bank. Ujjivan Small Finance Bank trading at the 38.44 level with a stop loss of 37.10 for the upside target of 40 rupees.
So guys, we have to buy Ujjivan Finance, small finance bank, currently trading near 38.57, as I can see. So आपको यही रेंज पे बाय करना है, कुछ 37 पॉइंट जो भी आपके आसपास में रेंज में होगा, 37.123. अभी it's trading near 38.60. So with a stop loss of 37.10, you have to look it for a target of 40. Right. So yes, guys, we have shared a BTST today on Ujjivan's small finance bank. उसके अलावा we'll move ahead with the stock queries until अगर हमें कोई potential entry मिलता है निफ्टी में. Right. सर 23,600 का पुट ले सकते हैं अभी CMP पर. 23,600 का पुट अराउंड 34 के आसपास ट्रेड हो रहा है. एज आई एम सेड कि मोमेंटम जो होना चाहिए बाइंग के लिए वो मिसिंग है. सो आप अगर आपने लिया भी है तो 3 से 4 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है, उसके ऊपर मोमेंटम आ नहीं रहा है. सो बेटर है आप इसे ना ले. अगर आपको लेना है तो हार्डली 5-7 पॉइंट का एसएल उसमें मेंटेन करिए, और 3-4 पॉइंट का अगर उसमें मोमेंटम आता है तो आप इसे एग्जिट कर सकते हो. Okay. Sir, what is your view on Zomato? So quite a good direction in the Zomato from the upper levels. It made a high around 300, and more than 30 to 40% correction is there in the Zomato, and got stuck in a range of 200 to 230 from almost from 8 to 10 trading session. So it's for a long-term purpose, you can buy around 210, 200 level for the next 1 to 2 years. Stock can head towards 400, 450 level. तो आप इसमें बने रह सकते हो. किसी ने ऊपर के बाय किया है तो आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हो इसे. किसी को फ्रेश एंट्री लेना है तो अराउंड 200, 210 के आसपास आपसे बाय कर सकते हो. बंधन बैंक. So one of the laggard counter in the banking space, and look at the weekly chart, daily chart. Stock is in a downtrend. It's better to avoid, right? We have so many other good stocks where you can go on a long, but it's better to avoid Bandhan Bank. If I talk about the support level, the 140 is a strong support zone, but the problem is there's no follow-up buying. Your stock is forming a low top, low bottom from last so many months as well as weeks. मधुर सर, could you please update on UBL, क्योंकि ये थोड़ा हमें टेक्निकली एकदम साइडवेज ही दिख रहा था. बहुत टाइम से एक रेंज में ट्रेड हो रहा था, फिर अभी एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, बट टुडे थोड़ा सा फॉलो बाइंग दिखा है. तो could you please update on this stock? Madhur sir, are you there? Guys, am I audible to you? Okay, I guess Madhur sir lost his network. So we'll wait again. Madhur sir will then join us. Yes, so he's already here. Yes, Avinash. So Madhur sir, I was saying, so there is a stock UBL United Breweries, and देखा जाए तो ये स्टॉक काफी टाइम से एक रेंज में मूव हो रहा है, 200 पॉइंट्स के, 200-300 पॉइंट के, राइट. एंड अभी अपर साइड से प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, बट आज ये स्टॉक में थोड़ा सा फॉलो बाइंग दिखा है. तो कुड यू प्लीज अपडेट ऑन इट, क्या ये करंट लेवल पे बाय करना चाहिए? UBL, you are talking about Avinash, right? Right. Okay. So on a weekly time frame, stock has given some selling off from in this week. As stock is down by more than 7% is entire week in last 4 days. But on a daily structure, आज थोड़ा सा support लग रहा है कि यहाँ पे support से buying देखने मिली है, right? But for next 1 to 2 days are quite important. अगर यहाँ पे negation होता है daily chart में तो आप फिर से buying कर सकते हो. But as of now, if I'm talking about the level wise, so एक 2000 के आसपास इसका strong support zone है. So 2000 is a strong support zone for the UPL. वहाँ पर आप buy कर सकते हो for a fresh entry. As of now, CMP पे हम सलाह नहीं करेंगे buy करने के लिए,
बट थोड़ा सा और डिप में मिलता है तो आप बाय कर सकते हो. बट एंड वन मोर थिंग, अगर ये 2140 के ऊपर सरपास होता है, किसी को ब्रेकआउट के लिए बाय करना है, तो ट्राई टू बाय अराउंड अबोव 2140 लेवल. तो 2140 अगर सरपास होता है तो वहां पर फिर से आप ब्रेकआउट के लिए बाय कर सकते हो. क्रिस जी, डेफिनेटली हम कोशिश कर रहे हैं, आपको निफ्टी के एक्सपायरी का ट्रेड देंगे हम. बट अगर हम निफ्टी में देखा भी जाए तो एकदम फ्लैटिश ट्रेड कर रहे हैं, राइट? कोई मोमेंटम ही नहीं है इसमें. सो initiating a trade will definitely going to decay your premium, I guess. So the put were tracking about 23,650 when the station was started. It was trading around 80, 78, 79 level. थोड़ा 2-3 पॉइंट का स्विंग आया है, बट जो मोमेंटम होना चाहिए वो वहां पर है नहीं, राइट? अगर हमने ट्रेड इनिशिएट भी किया होता तो कुछ खास उसमें बना नहीं होता. बेटर है कि हम थोड़ा वेट करें. अगर हमारा लेवल आता है अराउंड, जैसे मैंने बताया कि 65-70 इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर दिस पुट, वहां पर आता है तो विल डेफिनेटली इनिशिएट द ट्रेड, अदरवाइज वी विल अवॉइड द ट्रेड. great. SW Solara. सोलर SW स्टर्लिंग. Sterling. Okay, so there's this typo error here. So SW Solar stock is in a downtrend. Right, it made a high in last May, 24 मई के आसपास 828 का हाई बनाया था. ऑलमोस्ट मोर देन 50% करेक्ट हुआ है वहां से. इट्स बेटर कि आप इसे अवॉइड करें, राइट? बिकॉज काफी अच्छा करेक्शन आया है और फॉलो बाइंग फिर से हमें देखने नहीं मिल रही है. इफ आई टॉक अबाउट सपोर्ट जोन, 260 द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन. किसी को बाय करना है तो सब वेट फॉर सम मोर डिप. 260 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, वहां से हर बार एक बाउंस देखने मिलता है इसमें. सो 260 के आसपास में बाय कर सकते हो. एज ऑफ नाउ इट्स बेटर टू अवॉइड. Hyundai. So Hyundai is recently listed, and looking at the chart, right, थोड़ा सा अच्छा बाउंस बैक देखने मिला है लास्ट 5 to 6 ट्रेडिंग सेशन, राइट? 1600 से 1800 की रैली देखने मिली है लास्ट 5-6 दिनों में. यहाँ पे एक अच्छा बाइंग हमें देखने मिली है. वीकली में भी निगेशन हुआ है चार्ट में. तो आप बाय कर सकते हो अराउंड 1800 लेवल के आसपास. 1790 1800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, 1790 1800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां पर बाय कर सकते हो. बट द मेजर मोमेंटम विल क्रिएट अबव 1850 लेवल. once the stock has surpassed 1850 level, you can see the momentum towards 1900 1950 level. So अभी भी 80 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, तो मोमेंटम नहीं है. Yes, Avinash, continue with the queries. तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है मयूर जी का. सो अगर मार्केट 23,550 के नीचे क्लोज होता है तो 33 का 50 हो सकता है. 33 का 33 का 50 हो सकता है. द रेंज आई गेस वी वर लुकिंग फॉर 23,600 का पुट के बारे में बात कर रहे हैं वो. यस, आई गेस. मैं भी अगर 23,550 के नीचे होता है तो हाँ, तो उसमें थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है. पुट में थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है, राइट? यहाँ से अगर 20 पॉइंट का डिप आता है तो वो पुट थोड़ा सा आपको एक 10-12 पॉइंट का स्विंग उस पुट में आ सकता है. ग्रेट. आई गेस सर हमने जाइडस पे ऑलरेडी बात कर ली है, राइट? साइडर्स पे नहीं. जाइडस लाइफ. ओके. So pharma is a sector from last 2 days showing some short covering trigger in the pharma space, right? So आप देख सकते हो लुपिन हो सकता है, झाइडस हो सकता है, even Dr. Reddy are doing quite well from last 2 trading session. Even Zydus is up by more than 3% today, but stock is near resistance zone of 1030. 1030 के आसपास का strong resistance zone है. Once the stock surpass 1030 level, you can see the momentum towards 1100. So keep the level 1030 in your watch list, right? अगर ये 1030 का लेवल निकलता है डेली में या वीकली स्ट्रक्चर में,
वहां पे आपको एक 70-80 पॉइंट का मोमेंटम इसमें देखने मिल सकता है। मॉर्निंग स्टार भी फॉर्म हुआ है वीकली फ्रेम में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव सेटअप इसमें आ रहा है। So guys, we'll take two more stock queries and अगर उसके बीच में हम हमारे लेवल पे निफ्टी का ट्रेड जो हम देख रहे थे, ट्रैक कर रहे थे, वो अगर हमारे बैंक रेंज में आता है, then we will definitely initiate the trade because even we don't want you guys to make loss in any of the trades that we will initiate, right? Considering कि market में momentum नहीं है, जैसे कि मधुर सर ने already बता दिया, we'll still wait till see, अगर कुछ भी momentum आता है, हमें कोई भी opportunity दिखती है, then we will definitely try to initiate the trade. Meanwhile, we'll take two more queries. So one is IRB Infra. The monthly chart from last 4 months, stock is in consolidation. If I'm talking about the range, so 44 is the strong support zone and ऊपर में हडल ले रहा है 61 के आसपास. So 44 to 61 का रेंज है. अब लास्ट ऑलमोस्ट 5 मंथ्स का इसका रेंज है, तो रेंज के अंदर ही कामकाज हो रहा है इसमें. और सेटअप वाइज वीक है, अभी भी स्ट्रक्चर कोई खास इसमें है नहीं. आप दो चीजें इसमें रख सकते हो. नीचे 44 का सपोर्ट नजर में रखिए और ऊपर में 61 का लेवल नजर में रखिए. 61 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो एक 10-12 पॉइंट स्विंग इसमें आ जाता है. पर 44 का लेवल के आसपास ये आता है तो वहां पर आप फ्रेश बाय कर सकते हैं. मधु जी, प्लीज डोंट स्पैम बिकॉज आपको तो अगर मार्केट अगर आप ट्रैक करते हो, अगर आपको थोड़ा सा भी उसमें अगर आइडिया है हाउ इट्स ट्रेडिंग राइट नाउ, सो इसमें ट्रेड इनिशिएट करना इज डेफिनेटली नॉट अ गुड ऑप्शन. ये हमारे एक्सपर्ट्स भी वही कहते हैं. सो हम भी नहीं चाहते आप यहाँ से लॉस बना के जाए. सो प्लीज डोंट सच टेक्स. So the last query will be on SBI and banks का result भी है. So could you please update on it? So SBI नीचे के लेवल से रिकवरी देखने मिली हमें आज. इसका रिजल्ट आया है बट फिर से वापस डे लो के आसपास आया है स्टॉक. सो सेटअप वाइज थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम है इसे. राइट 740 735 जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, वहां पर एक फ्रेश बाय बन सकता है फॉर ट्रेडिंग पर्पस. फॉर इट कैन हिट टुवर्ड 780 790 लेवल. बट एज ऑफ नाउ कोई बाय नहीं है यहाँ पर. थोड़ा सा अगर डीप मिलता है अराउंड 740, वहां पर आप बाय कर सकते हैं इसे. Avinash, you are speaking on a mute. So yes, before we end the session, yes, I would address on whatever you are saying. आपने कहा कि आपको कोई सुबह के ट्रेड में लॉस हुआ. Yes, please make sure हम जो भी ट्रेड इनिशिएट करते हैं, we give a strict stop loss. Maintaining a stop loss is something हमने हमेशा से सजेस्ट किया है, राइट? अगर आप लोग स्टॉप लॉस से ट्रेड नहीं करोगे, that is definitely a fault from your end as well, right? मार्केट अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है, we also make sure कि स्टॉप लॉस दें हम. यस जी, ऐसा कभी नहीं होगा कि हमने कोई भी ट्रेड में हमारे स्टॉप लॉस हम सजेस्ट ना करें. दैट इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल. अगर इंट्राडे ट्रेड का बात किया जाए, हमने सुबह इंट्राडे ट्रेड दिया था एंड हमने उसमें स्टॉप लॉस भी सजेस्ट किया था, राइट? सो यस, आई गेस दैट्स इट गाइस फ्रॉम आवर एंड. Coming to the same thing, guys, please make sure whatever the trade you guys initiate, please maintain a stop loss of whatever our experts suggest you. So that's it, guys, from our end. Thank you so much for joining. Madhu sir,